The treatment of the tinnitus also. Is a new SIC. Atal Bimat Vyakti Kalyan Yojana is a new welfare measure, cash compensation for the as masker and the hearing aids. In hearing aids, you can go for the treatment of the tinnitus also. So, after powering through the post lunch food coma and wrapping up lectures on occupational health disorders and community medicine and tinnitus and ENT, we are now headed to Matunga, grateful for the chance to soak in yet another enriching medicine lecture. It usually takes us 40 to 50 minutes for us to reach there, and I know I can take a nice nap on the way, but thanks to my motion sickness, I am not able to sleep in the car, and I usually spend my time listening to some music or reading random things or gossiping with my friends most of the time. Class is done and it's 9:15 right now, and we are heading back to my hostel now. I must say, Mumbai looks amazing at night. I'm kinda obsessed with these city lights lately. Oh my god, how beautiful. And new thing with my hostel is waiting forever for the elevator to get to the ground floor and take me up just to the second floor. But hey, people on the 9th and 10th probably need it more than I do. Anyway, it's officially bedtime for me. So yeah, good night. Bye bye. See ya. हाय लाइटिंग मैं भी लिफ्ट में हूँ. आज मॉर्निंग का लेक्चर कैंसिल हो गया, सो थोड़ा लेट जा रही हूँ. 9 AM राइट नाउ. अभी देखते हैं. These corn tasted okayish, like not bad but not good. This feels like a healthier way to start my day compared to the usual dosa or idli from the hostel canteen, which I'm really bored of. Like first and second year में तो पूरा मैंने डोसा एंड इडली खाया है मेरे कॉलेज के कैंटीन में भी. And luckily here I am having misal masala in my lunch. उल्टा तो उन्हें कॉल किया, उसके पहले मैं फ्लिपकार्ट पे देख रही थी 10 मिनट्स. So today marks my grand debut in the world of respiratory medicine postings. I have always loved the respiratory system. Lungs are cool until they are not. Like when they are dealing with tuberculosis, which is unfortunately way too common here in India. And let's not even start on Mumbai's rise on drug-resistant TB over the past few years. Oh my god. But hey, duty calls, gotta show up, learn, and yes, secure that sweet attendance.
armed with my trusty stethoscope and my beloved 90 N95 mask. I'm sorry. Basically, my second skin now. I'm all set to breathe cautiously and observe wisely. Yes, let's go. सब तो हो गया. मतलब लेके चलने तो सर डांटते हैं. वो दूसरे वाले सर डांटते हैं. मैंने टीवी लिया था. पढ़ाया था. ये छोड़ ही नहीं रहे. N95 नहीं है. नहीं है मेरे पास है. सच है. सही है. आरएस पढ़ा रहा है. आरएस का पोस्टिंग आ गया. And there is obviously presence of rods in the myeloid blast. Now coming to the acute lymphoblastic leukemia, so the peak age is between 2 to 10 years. As the time goes by, my exams are creeping closer. Starting from next week, actually. Honestly, all I want right now is to find a quiet corner and study in peace. Not rush off to the postings, yeah, but I guess it's all about balance, and this posting is definitely teaching me that. Still, I know everything will fall into place eventually. Why am I sounding so doubtful while saying that? And hey, I'm kinda relieved it's wrapping up next week. Just a 14-day ride, but it felt longer. So let's take a shower to relieve my mind and study for the rest of the day. Bye. हाय. सो अभी मैं घर पे हूँ एंड अभी 14 अक्टूबर हुई है अम्बेडकर जयंती. ओह शिट, 14 अप्रैल. हाँ, जस्ट 12 बजे है. सो कितने सारे पटाखे फूट रहे हैं. लाइक वाओ, कितना मजा आ रहा है. ओह माय गॉड. लग रहा है. सो आज मेरी फ्रेंड का भी बर्थडे है, रोमा का. सो हैप्पी बर्थडे रोमा. एंड वाओ, ऑनेस्टली मुझे याद था कि मुझे उसे बर्थडे विश करना है करेक्ट 12 o'clock पे. बट अभी मैं एक शो देख रही थी तो मेरा ध्यान में नहीं रहा. एंड इट वॉज 11:59 एंड इतने पटाखे की आवाज़ आने लगी. सो लाइक हो गई 14 अप्रैल. सो हैप्पी बर्थडे. अभी थोड़ी देर में सोने जाऊंगी होपफुली. एंड कल फिर मुझे मेडिसिन लेक्चर्स के लिए जाना है. भले ही कल छुट्टी है बट छुट्टी नहीं है क्योंकि मेरा मेडिसिन का लेक्चर है. एंड कॉलेज की छुट्टी है. लकीली पोस्टिंग्स की भी छुट्टी है. नहीं तो प्रोफेसर से कहते हैं कि कॉलेज हॉलीडेज नॉट अ ओपीडी हॉलीडे. बट ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट.